Hello friends, welcome to Science Plus TV. Today's video is dedicated for my young subscribers who are studying in class 6. As you can see, I'm going to take the chapter of plants for class 6. So let us just start today. In our previous classes, we have already studied that a large variety of plants exist around us, right? Also, we have studied that plants make their own food by the process of photosynthesis. Every plant part has a specific function, okay, and they have very important role to play. And we all are dependent on plants for our needs, daily needs, okay. But in this chapter, what we are going to study is we will be discussing about different plants around us. We will also discuss the parts of a plant. The modifications of root, stem, and leaves will be discussed also with you. Then we will be uh, getting to know the structure of a flower. Finally, we will be studying about pollination. Okay, so I hope you will be enjoying the chapter with me, right? Let's start the topics one by one. First topic I'm going to take is different types of plants around us. Okay, so we have following major different types of plants which we see around us: climbers, shrubs, trees, creepers, and herbs. Their examples are also given to you. Climbers, for example, jasmine, money plant. Shrubs जो हैं lemon, rose. Trees हैं mango and banyan. Creepers, strawberry, cucumber. And herbs, tomato and mustard. So let us talk about them in a bit detail. Okay, you can see here I have given you a chart kind of, where I have explained to you what are herbs, shrubs, trees, creepers and climbers. Let's see first of all the herbs. Herbs are very small plants with a non-woody stem. You can have a look at their stem. It is completely green. It is non-woody. That means they have a weak stem, right? Then we'll talk about the shrubs. Shrubs are medium bushy plants, right, with multiple woody stems. These are not having one single stem, but they have multiple, means many woody stems. Okay. Let's talk about trees. Everybody has seen trees around them. They are very tall, perennial, with single woody stem or trunk. This large single woody stem is also known as trunk. Then are the creepers. Creepers are thin, weak stemmed plants that creep along the ground. मतलब ground के साथ साथ वो चलते हैं, right? They move along with the ground, right? And climbers, इनके नेम से ही पता चल रहा है. Creepers मतलब creep करने वाले, जमीन के ऊपर रेंगने वाले, right? And climbers means that climb up. कोई भी support ये find out करते हैं अपने लिए and then they climb up like this. Okay, they are again thin, weak stemmed plants that climb up the other objects for their support. Okay, so that was all about the different types of plants around us. I hope you have got to know about it. Now we will, the next topic is very important. Parts of a plant. एक प्लांट के क्या क्या पार्ट्स होते हैं और उनके क्या फंक्शंस होते हैं. आई हैव टेकन अ वंडरफुल पिक्चर, अ डायग्राम फॉर यू, वेयर you can see all the parts clearly and their names and functions are also mentioned over here. So we have two basic parts of a plant: the shoot system, which is above the ground. आप देख सकते हैं, this is the soil. Soil के ऊपर का जो part है, the part above the soil is the shoot system, and the part below the soil is the root system. So let us start from the bottom. We have the first part is root, very important part. It supports the plant, hold the plant in the soil, and also plays the function to absorb water and minerals from the soil, right? Then the very next part is a stem. Stem supports the plant, and all the other parts of the plant are beared by the
stem. Stem bears all the other parts of the plant, right? Next we have the fruit. You can see a red colored fruit is shown to you here. It is just an imaginary, the name, there is no name for this plant. It is just a general plant, okay? Fruit that protects the seeds. We always find the seeds of a plant inside the fruit, okay? Then we have leaf. Very important, सबको पता है leaf क्या करता है? It performs photosynthesis. Then another important part is flower. Flower helps in reproduction. Okay. Flower helps in pollination and reproduction. Flowers then after pollination, the flower get converted into fruit. Okay. So that was all about the parts of a plant. Moving on to the next topic. What happens sometimes that the different parts of the plant, they perform some additional functions along with the main function they perform. For example, जैसे roots हैं, what they do mainly, they absorb water and minerals from the soil for the plant, but sometimes the root starts performing another functions also. So that we call as modifications. फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले क्या है, रूट्स जो हैं कभी कभी स्टोरेज का फंक्शन करती हैं. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ कैरेट, radish, beetroot, turnip, sweet potato. Okay. Sometimes they give extra support along with the support inside the ground. They give extra support. For example, prop roots in banyan and stilt roots in sugarcane. Banyan में आपने देखा होगा कि because it is a very bushy plant, very heavy plant, so some root-like structures they come from the bushes and go towards the soil. These are called as prop roots, gives extra support. Stilt roots, also in sugarcane, you must have seen the bottom part of the sugarcane. Some extra stem-like structures they grow and they get into the soil to give extra support to sugarcane. These are called as stilt roots. Sometimes the root performs the function of respiration, breathing. इनको हम breathing roots भी बोलते हैं mangroves में. These are also known as pneumatophores. Very important. तो आप इसका जो है स्पेलिंग भी अच्छे से लर्न कीजिएगा. Then sometimes they help in climbing. Okay, for example the climbers जितने भी black pepper, money plant वगैरह हैं, तो climbing में help करती हैं like extra support. Okay, stem node से ये निकल आती हैं special roots and they help to climb up a support such as wall, rock, etc. Then is parasitic roots. For example, parasitic plant dodder. Dodder cannot prepare its own food, so it has some parasitic roots which penetrate into the host, body of the host and absorb the nutrition. Okay. Similarly, we have modifications of stem when stem performs extra functions, like for example, for storage, food storage, in case of potato known as tuber, in case of ginger known as rhizome, and in case of onion known as bulb. Okay, everybody must have seen potato, ginger, and onion. So these are the modified stems. Okay, then for support, in case of grapevine, cucumber, sweet pea बहुत इजीली आपको दिख जाएगा. स्टेम में से स्प्रिंग लाइक छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स निकल आते हैं जिनको बोलते हैं स्टेम टेंड्रिल्स. दे प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट. देन फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर, अभी देखिए डेजर्ट प्लांट है जैसे कैक्टस, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इफ इट इज हैविंग लीव्स, लीव्स विल बी हैविंग स्टोमेटा, और स्टोमेटा से पानी जो है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू लॉस होगा, वाटर लॉस होगा. सो कैक्टस कंजर्व्स वाटर, स्टोर्स द वाटर, क्योंकि इसके अंदर जो स्टेम है वो थिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है. इट हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ वाटर. इन कैक्टस इट ऑल्सो मैन्युफैक्चर द फूड. ठीक है, स्टेम ही उसमें फूड का प्रोडक्शन भी करती है. देन फॉर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन में थॉर्न्स प्रेजेंट इन द रोज, लेमन, रास्पबेरी. इनमें क्या होता है, रोज और लेमन सबने देखा होगा कि स्टेम के ऊपर छोटे छोटे थॉर्न्स, कांटे निकल आते हैं, विच हेल्प्स इन प्रोटेक्शन. देन वी हैव लास्टली बट नॉट द लीस्ट, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स. लीव्स का फंक्शन होता है to perform photosynthesis, but along with it sometimes it gives extra support like leaf tendrils in gloriosa lily and pea. इसमें क्या होता है, लीफ के आगे से स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जिनको बोलते हैं लीफ टेंड्रिल्स. स्टेम के ऊपर बने तो स्टेम टेंड्रिल्स, लीफ के एज पे बने तो लीफ टेंड्रिल्स. ओके, देन वी हैव कंजर्वेशन ऑफ वाटर. कैक्टस के अंदर जो लीव्स होते हैं दे कन्वर्ट इनटू स्पाइंस, दे मॉडिफाई इनटू स्पाइंस, एंड
helps to prevent loss of water. And finally, for trapping insects, insectivorous plants, carnivorous plants हमने पढ़े हैं अपने पिछले चैप्टर्स में. So there, if we talk about picture plant, तो उसमें जो leaves हैं, they convert into a picture. घड़े जैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक फ्लैप जैसा होता है उसके ऊपर. It covers the insects when they come to them. Okay, so that was all about modifications of root, stem and leaves. इसमें आपको सारे एग्जाम्पल गिवन हैं, इनका सारा जो है डिटेल्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. यस, वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर. ओके, एक जनरल स्ट्रक्चर आपके सामने बनाया है फ्लावर का, आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं, बहुत इजी है. मैंने एक वीडियो में जो है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर शेयर भी किया है, तो आप उसको भी जो है फॉलो कर सकते हैं, राइट. So, सबसे पहले बेस पे होता है रिसेप्टिकल, थिक पार्ट जिसके ऊपर बाकी सारे पार्ट्स जो हैं वो लाई करते हैं, राइट. इसके जस्ट ऊपर आप देखेंगे ओवरी, और इसी जस्ट ओवरी के ऊपर है स्टाइल, और सबसे ऊपर है स्टिग्मा. दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर नोन एज कार्पल. ओके, इसके जस्ट साइड में आप देख सकते हैं ग्रीन कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको कहा जाता है सेपल्स. सेपल्स गिव प्रोटेक्शन टू द फ्लावर व्हेन इट इज अ बड. बड स्टेज में प्रोटेक्शन का काम करते हैं सेपल्स. देन इसके जस्ट ऊपर यू कैन सी द कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर. ठीक है, द पिंक कलर्ड पार्ट, इसमें जो पिंक दिखाया गया है दैट इज द पेटल. बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं पेटल्स, डिफरेंट कलर्स के होते हैं. दे अट्रैक्ट इंसेक्ट पॉलिनेटर्स फॉर पॉलिनेशन. ओके, और इनके अंदर ही जो है दे हैव द नेक्टर इन देम which helps also in the pollination. Okay, अभी you can see just on the petals, यहाँ पे आपको ये कुछ filamentous structure दिखाई देंगे. there is a filament at the bottom, और उसके ऊपर एक structure है जिसको बोलते हैं anther. Okay, so this anther and filament, they both together form the male part of the flower, which is known as pistil. Okay, filament and anther, they together form the male part of the flower, which is known as stamen. Okay, this is stamen, and stigma style ovary forms the pistil. This pistil is the female part and stamen is the male part of the flower. So that was all about the structure of a flower. इसका function तो आपको पता ही है. टॉपिक इज पॉलिनेशन. पॉलिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. पॉलिनेशन दो तरह का होता है. पॉलिनेशन इज जस्ट सिंपली द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर्स टू द स्टिग्मा. आप देख सकते हैं यहाँ पर भी पोलन ग्रेन्स होते हैं एंथर के अंदर. द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स from anther to stigma is known as pollination. It is of two types, self pollination and cross pollination. Just have a look. एक ही फ्लावर है, उसी के एंथर से पोलन ग्रेन्स निकल के उसी के स्टिग्मा पे जा रहे हैं. द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर्स टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन. ठीक है, ये पॉलिनेशन के बाद ये फ्लावर जो है सीड में कन्वर्ट होगा और सीड से ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम टाइप. आप ध्यान दीजिएगा, ये दोनों फ्लावर्स सेम टाइप के हैं, सेम प्लांट के हैं, बट if the pollen grains are moving from one flower to the stigma of the another flower, then it is known as cross pollination. So that's very important. Pollination का process जो है fertilization में help करता है and help the plant to produce the fruits and the seeds ultimately. And seeds are required for the further propagation of the plant. Okay, so that was all about this chapter. I लोगों को काफी आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा. द वीडियो मस्ट बी लाइक्ड बाय यू, आई एक्सपेक्ट. एंड थैंक यू वेरी मच एवरीवन. कीप वॉचिंग द वीडियोस एंड जस्ट सब्सक्राइब द चैनल साइंस प्लस टीवी. Okay, you can follow, share, like also. Okay, just stay in touch. Thank you.